अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग हैदराबादी चिकन तहारी बना रहे हैं। बहुत ही आसान तरीका है, वीडियो फॉलो करिए और सीखिए। चलिए। आज हम लोग हैदराबाद स्टाइल में चिकन तहारी बना रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है। उसके लिए पहले हम लोग इसमें ऑयल ऐड करेंगे। प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए पहले हम लोग इसमें रॉ स्पाइसेस ऐड करेंगे, सिनेमन, कार्डमम और क्लोव्स, उसके साथ साथ शाजीरा। नेक्स्ट हम लोग इसमें स्लाइस्ड ऑनियंस ऐड करेंगे। ऑनियंस ब्राउनिश शेड में आते ही हम लोग इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा भुने गए बाद हम लोग इसमें स्लाइस्ड टमाटोस ऐड करेंगे। टमाटोस के साथ साथ हम लोग इसमें स्लाइस्ड ग्रीन चिल्ली भी डालेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसमें अच्छा सा वॉश करा हुआ चिकन इसमें ऐड करेंगे। चिकन 10-15 मिनट तक अच्छी तरह पके बाद हम लोग इसमें स्पाइसेस भी ऐड करेंगे, रेड चिल्ली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट। नेक्स्ट हम लोग इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। इन सारे मसालों में चिकन अच्छी तरह पकते वक्त हम लोग इसमें लेमन जूस भी ऐड करेंगे। इसकी वजह से रेसिपी और भी मजे का रहेगा। इसको और भी मजे का बनाने के लिए हम लोग फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर और मिंट लीव्स भी ऐड करेंगे। चिकन को वाटर में बॉईल करने से पहले ही हम लोग इसको दही में भी बॉईल होने देंगे, इसलिए पहले हम लोग कर्ड ऐड करेंगे। चिकन अच्छी तरह बॉईल हो गए बाद हम लोग इसमें वाटर ऐड करेंगे।
वाटर अच्छी तरह बॉईल होते वक्त इसमें हम लोग बासमती राइस, सोक्ड बासमती राइस ऐड करेंगे। रेसिपी परफेक्टली बन गया है। इमीडिएटली हम लोग इसको पैक करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कर रहा बोल तो समझो कि अपनी तरक्की है। अरे यार
हैदराबादी चिकन तहारी बनाना बहुत आसान है लेकिन मज़े में बहुत बढ़िया है। आप भी अपने घर पे कोशिश करिए। आपको कैसे लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर करना मत भूलिए। और नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक टीम के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफ़िज़।